Yes, welcome everyone. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam, sir. And today we are going to start a new topic. It's called recommender systems. You are all very familiar with them. Obviously, when we started this subject at that time, it was very new. But over time, it has become quite familiar. However, we will look at some of the details which might not be very familiar to all of you. So we'll look at some of these details in a general manner and look at some of the techniques and algorithms that are used, and then we will invite your comments on how do you think we can improve the performance of recommendations. So the purpose of recommendation systems is to number one, help people in reducing the amount of information overload. So we know that the amount of choices that now we have is growing very rapidly, and it can become very difficult to choose among the choices available. So recommender systems are systems that help us in making that choice. So let me pull out my slides so that we can start this session more formally. And I would again remind you that if you have any questions during the presentation, please stop and ask your question so that I can respond to. So let me share my screen now. So today our topic is recommender systems, and like I just said, that they are systems with a very specific purpose, and the purpose is to provide recommendations for making choices, and these recommendations must be somehow suitable for the user, right? Uh, so that's the purpose of recommender systems. This is one example which is very familiar now. This slide is also a bit old, like about, I think 2 years old now. The Amazon website has changed a little bit, but this actually captures the essence of recommender systems. So I was searching for a book called The Age of Spiritual Machines, and Amazon provided with me some options which are listed at the bottom of the screen, right? And the recommendations were in the form of books that, and Amazon told me that customers who bought this item, they also bought these following books. So as you can imagine that there are millions and millions of books available on Amazon, but Amazon selected some of them to recommend them to me. So this there must be an algorithm uh, behind this display of books, which will select the most relevant books that they should be shown here. So it depends on many variables. Number one is obviously the type of books, right? So the assumption over here is that a person who reads this book may also be interested in reading books similar books. So that's one variable. The second variable is the individual preferences of that person, right? If you somehow can find out what kind of books this person likes, then you can find out exactly those type of books and recommend them over here. And then there's another method which is a bit of indirect, which works something like this: that okay, this person uh, has likes something very similar to what this another person likes, so they have very similar tastes. And we know that the other person purchased these books, so why not recommend them to this first person because they like the same books? So that's another way of coming up with recommendations. So these are various methods that are used by recommender systems, and we'll look at them in a bit more detail, and we'll look at what issues come up when we try to implement these type of techniques in recommender systems. These days, these are used in many domains. As you can see from this slide, they can help you in finding out your next vacation spot. For example, you want to go somewhere and you want to make up your mind. A recommender system can suggest you places, right? Based on your past preferences, based on your budgets, based on your location, and so on and so forth. And you can see that there are so many other areas where we need similar recommendations. If you want to have some plumbing, um, something get you want to get something fixed in the plumbing of your house, then you need a plumber who is competent, and maybe you also want uh, someone that's not very expensive, and you might also want someone who can come quickly to your home, and so on and so forth. So there will be many parameters based on which you'll need recommendations. So as you can see that different domains would require different type of variables and parameters to tell you what is most suitable for you. For example, if you want to learn something new, then it would depend on your previous knowledge and your interest in that area, and some other variables, right? So which school to go to, which doctor to go to, which good people to make friends with. So all these areas require recommendations.
And the objective of recommender systems is to provide recommendations that are most suitable for that person, so that they don't have to search through the entire list and try to shortlist that somehow. The recommender systems intelligently make those choices for you. And obviously, they don't make decision for you; they just make recommendations, and you can choose among the best options. So, what are the very simple methods that are used in recommender systems? One is the average rating, for example. So, the system can tell me, okay, people have been rating this item, it may be a book or a restaurant or something else, and this is the average rating that has been given to this item by people who have either purchased that item or used it or visited this place or something like that. So they can tell. So this information will help me in making some kind of decision. If it's a very poorly rated restaurant, for example, I might not want to go there and things like that. And sometimes they suggest things by saying that, okay, you have purchased this item, but you may also like these other items. Right? Or they can say that, look, you have purchased this camera, but you probably need another lens for it. Right? So it's somehow they know that these two products go together. And then, for example, if you book air ticket to a new destination, they can recommend you uh, hotels to stay there. They can recommend you car hire services because they are also related to each other, right? So they know that, okay, you're going for vacation to another city, or there you might need a place to stay. You might need some local transportation. You might want to know what are the food options available, or where are the nearest banks or pharmacies or things like that. So they have this intelligence in there. So these are some of the formats which recommender systems work. These are some of the applications, suitable jobs, what are suitable jobs for you. Again, they will match jobs with your qualification, interest, availability, all those things. Suitable homes to rent, suitable partners, suitable employees, suitable food. So they're very sophisticated recommender systems for all these type of domains. Why use recommender systems? Because they overcome this problem of information overload. Like I said, that if you just make a list, it will be a very long list, and if there are many variables on which you have to decide, then it becomes very cumbersome. So these systems help us in overcoming this problem, and they also increase satisfaction because you make better choices. If you have more accurate information about the options, then you will obviously be in a better position to make the right choice, and that will increase your satisfaction. So, for example, you want to learn something new, there are hundreds and thousands of resources available, but what are the most suitable resources for you in particular, right? If you can find that out, then it will obviously help the person in learning better. On the commercial side, they can increase sales, they can create good customer relationships and optimize resources for production, etc. So there are commercial aspects, and there are obviously more social aspects where these can be used to recommend the system. Obviously, the dominant part is the commercial part because that's the most visible one that we see. But it does not mean that's the only domain. We can use recommender systems like we have been discussing in previous slides in a lot of domains. So, what are the types of recommender systems? And one is one is called personalized, and the other ones are non-personalized. So the average rating one example that you saw on the first slide, that's the example of a non-personalized type of software because it collects data from the public sphere, and it's nothing. There's no information about your personality that goes into that average rating, right? It's the rating that other people have given that item. So that probably is the non-personal. Another example, if you, for example, go to a news website like Dawn newspaper or Tribune or some other newspaper, they have a list at the corner of their screen saying most read stories or most talked about stories or most shared stories. So these are all non-personalized because they just collect data from the visitors and see, okay, which story is being shared the most, and then they put that on the list. So they don't use any of your personal information in making that list. It's depend on what people are reading and sharing, etc. The second type is personalized, and I think in the examples that we discussed in the beginning of today's class were mostly personalized. For example, when we were talking about example of what kind of books I like, so if they know what kind of books they like, they can offer me more
books similar to that. So that's a personalized type of recommendation. Another example that we saw was that, okay, my friends like this book, and since they have liked it, there's a high chance that I also might like this because I like similar items that my friends like. So that's another way of recommending. By the way, this is called collaborative filtering. Collaborative filtering is when they take the social angle and see, okay, this person belongs to this social circle and they like these type of items. Yes, Sama. Sir, can you please give us one more example of non-personalized recommender systems? So non-personalized, I've given you 3 or 4 examples. For example, average rating, that is non-personalized. Most read news stories, that's another non-personalized. Most shared one, that's non-personalized. So these are non-personalized because they don't factor in any of your personal information in making this. It's based on just the averages of what people are rating and what people are saying about these items or places. So these are non-personalized. These are easier to calculate. जैसे हमारी IBA की वेबसाइट पे भी आपने देखा होगा the most frequently asked questions section होता है. ठीक है, that's non-personalized because वो देखते हैं कि सबसे ज्यादा questions कौन जो है इस टाइप के questions सबसे ज्यादा frequently जो है वो लोग पूछते हैं, तो उस question को वो उस list में शामिल कर देते हैं. ठीक है, तो वो एक non-personalized type of recommendation होती है. इसी तरह से वेबसाइट पे अगर IBA की ये दिया हुआ है कि most clicked on links, for example, कि सबसे ज्यादा IBA की वेबसाइट पे किस जगह पे लोग जाते हैं, एकेडमिक कैलेंडर पे जाते हैं सबसे ज्यादा, या सबसे ज्यादा जो है वो फी वाउचर वाले पे जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं. ठीक है, तो वो ट्रैफिक से एनालाइज करके उसको वो वहाँ पे उस लिंक को जो है क्विक लिंक्स में ऐड कर देते हैं. तो क्विक लिंक्स जो है फिर उससे वो भी एक नॉन पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन होगी, क्योंकि क्विक लिंक्स में आपने डिसाइड तो करना है कि इसमें कौन सा जाएगा लिंक, तो वो वाला जाएगा जो सबसे ज्यादा लोग जहाँ पे जाते हैं. वो आप कैसे कलेक्ट करते हैं डेटा? यू जस्ट लुक एट योर लॉग्स फॉर द लास्ट लेस देन 1 year or 2 year, और उस बेसिस पे आप उसको जो है सिलेक्ट कर लेते हैं. So these are all non-personalized ones. Thank you, sir. Okay, that's great. Any other question? If you have some or anyone else, that would be great. It makes the section more interactive. Personalized जो है उनमें हमने देखा कि 3 टाइप की है. कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग जो सबसे इंटरेस्टिंग होती है, मुझे लगती है, फिर कंटेंट बेस्ड होती है और नॉलेज बेस्ड होती है. कंटेंट बेस्ड होती है उसको मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है यूजर इंटरेक्शन, और नॉलेज बेस्ड में ब्रैकेट में लिखा है डोमेन मॉडल्स. मतलब है कि जो हमने देखे थे उसके सारे डोमेन्स जो थे वो अलग अलग थे. ट्रैवल का डोमेन अलग था आपका, अगर आपने कोई घर रेंट करना है, आपने कोई मेड हायर करना है, तो ये सब डिफरेंट डोमेन्स हैं. ठीक है, तो उसमें उस डोमेन का एक हमें मॉडल बनाना पड़ता है, इंफॉर्मेशन मॉडल. इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं इस डोमेन में, लोग किन किन बातों का ख्याल रखते हैं, तो वो अलग से एक मॉडल बनता है डोमेन का. तो उस डोमेन की बेसिस के ऊपर हम वो रिकमेंडेशन जनरेट करते हैं. तो इनकी डिटेल्स जो है वो नेक्स्ट स्लाइड्स में आ रही है. लेट्स लुक एट कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग. कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग का जो बेसिक आइडिया वो ये है कि सिमिलर पीपल लाइक सिमिलर प्रोडक्ट्स. ठीक है, जैसे मैं बताया था कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर रिकमेंडर सिस्टम को मेरे फ्रेंड्स के बारे में पता चल जाए कि किस टाइप की जो है प्रोडक्ट्स लाइक करते हैं, तो वो फिर उसी टाइप की प्रोडक्ट्स मुझे भी रिकमेंड करेंगे. ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इसी सोशल सर्कल से बिलोंग करता है, तो दे ऑल हैव सिमिलर टेस्ट. तो इट्स एन अजम्पशन, ऑब्वियसली इट्स नॉट 100% गारंटी तो नहीं होती, लेकिन आपने वो रिकमेंड कर सकते हैं. ठीक है, तो उसमें ये होता है कि प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि हाँ ये उसको ये चीज पसंद आएगी, क्योंकि ये जो दोस्त हैं या पीपल हु आर वेरी सिमिलर टू हिम, ठीक है, मे नॉट बी माय एक्चुअल फ्रेंड, बट पीपल हु आर वेरी सिमिलर टू मी, तो वो सिमिलैरिटी किस तरह से वो रिकमेंडेशन सिस्टम कलेक्ट करते हैं, जिसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में भी देखेंगे दोबारा से. और इसी तरह से प्रोडक्ट्स की सिमिलैरिटी जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो अगर हमें बेसिक आइडिया तो यही है कि सिमिलर लोग, पीपल, सिमिलर का मतलब है पीपल हु हैव सिमिलर टेस्ट. ठीक है, और पीपल हु लाइक सिमिलर थिंग्स, या पीपल हु बिहेव सिमिलरली, समथिंग लाइक दैट, और maybe people who have same demographics. तो डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकते हैं सिमिलर पीपल के. बट कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग में जो है वो हम सिमिलर पीपल से हमारी बात होती है ऐसे लोग जो सिमिलर उनका बाइंग बिहेवियर या प्रेफरेंस बिहेवियर उनका सिमिलर होता है. इन अदर वर्ड्स थोड़ा सा आप समझ लें कि जो टेस्ट है वो सिमिलर होता है. और तो वो assumption ये है कि सिमिलर लोग जो है वो सिमिलर प्रोडक्ट्स जो है पसंद करेंगे. तो इसको हम एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, उनके बेसिक स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले तो सिमिलैरिटी लेवल्स जो है सारे यूजर्स के विद एक्टिव यूजर, उससे एक्टिव यूजर का मतलब है जिसके लिए हमने रिकमेंडेशन जनरेट करनी है, उस यूजर से बाकी जितने भी यूजर्स का डेटा हमारे पास है, ठीक है, वो उसमें सिस्टम के अंदर ही होना पड़ेगा, तभी हम उसको सिमिलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल आपकी एक वेबसाइट है, आपने खुद एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, उसका एक बुक स्टोर है, तो बुक स्टोर में जो भी आपकी
लोग आते हैं वहाँ पे कुछ पिचेस करने के लिए, उसका डेटा आपके पास कलेक्ट होता रहता है, ठीक है। तो दे बिकम द मॉडल्स फॉर दिस एक्टिव यूजर। तो उस एक्टिव यूजर से फिर बाकी यूजर्स की सिमिलरिटी का लेवल है वो कैलकुलेट किया जाता है, दैट्स द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये सिमिलर लोगों का ग्रुप है। फिर जो है हम देखते हैं कि इन लोगों ने जो है वो कौन सी टाइप की प्रोडक्ट्स जो है वो पसंद की। फाइंड अ सूटेबल नेबरहुड का मतलब ये है कि हम जो है अभी हमें अपना सर्च को एक स्पेस में रिस्ट्रिक्ट करना होता है, ठीक है। उसको पूरा जितना भी डेटा अवेलेबल है उसके ऊपर हम अगर अप्लाई करेंगे तो उससे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती, लेकिन कंप्यूटेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिर हमें क्या होता है, बैलेंस करना होता है, इंक्रीजिंग दी एक्यूरेसी एंड डिक्रीजिंग दी कंप्यूटेशनल कॉस्ट। तो उसका जो बैलेंस होता है वो एक सूटेबल नेबरहुड कहलाता है। फिर उसकी बेसिस पे हम जो है हर प्रोडक्ट को एक स्कोर जो है असाइन करते हैं, और फिर जिनका हाईएस्ट स्कोर होता है वो फिर उनको हम रिकमेंडेशन लिस्ट में लेके आ जाते हैं प्रोडक्ट से। तो ये कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग का ये एक ओवरव्यू है, ऐसी थोड़ी सी कैलकुलेशंस मैं आपको बताऊंगा। दे आर आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू विल बी एबल टू सी द रिएक्शन इन द मैथमेटिक्स कैसे सॉल्व करता है। कंटेंट बेस्ड होती है जो सेकंड हमने देखी थी पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन में, उसका बेसिक आइडिया ये था कि पीपल विल लाइक प्रोडक्ट सिमिलर टू दोस दे लाइक बिफोर। इनके इसमें अब ये है कि uh, एक ही एक्टिव यूजर की जो हिस्ट्री है उसको हम देखा जाता है, किसने पास में किस किस टाइप की चीजें जो है पसंद की थी। तो फिर उनसे सिमिलर प्रोडक्ट्स जो है हम रिकमेंड करते हैं। तो इसमें ये वाला जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच है, हम कंटेंट बेस्ड अप्रोच होते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो है हम देखते हैं कि पास में कौन सी प्रोडक्ट्स जो थी वो पसंद की गई थी, तो उसी टाइप की प्रोडक्ट्स जो है हम रिकमेंड करना चाहते हैं। तो इसमें जो बेसिक स्टेप होते हैं वो ये होता है कि सबसे पहले तो यूजर प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ती है बेस्ड ऑन पास्ट इंटरेक्शंस, ठीक है। उनकी बेसिस पे हम एक यूजर प्रोफाइल करते हैं, फिर उसमें से हम कंटेंट के फीचर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे पास में से पता चला कि 5 बुक्स मैंने या 10 बुक या 50 बुक्स मैंने पढ़ी है, तो उन 50 बुक्स को वो एनालाइज करके देखते हैं कि इनमें क्या बात है जो कि ये पसंद आती है इसको इन बुक्स के अंदर, ठीक है। व्हाट आर द फीचर्स इन दीस बुक्स, क्या वो सारी सेम ऑथर की लिखी हुई है, या सारे सेम सब्जेक्ट की हैं, या दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, या दो डिफरेंट ऑथर्स हैं जिनकी ज्यादातर बुक्स होती हैं, या जो है इनका जेनरा क्या होता है, ठीक है। ये फिक्शन बुक्स होती हैं या नॉन फिक्शन बुक्स होती हैं। तो वो फीचर्स जो है वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि इनमें से हमें एक सेट हमें मिल जाए फीचर्स का, देखिए ये आदमी जो है इसको ज्यादातर नॉन फिक्शन किताबें पसंद आती हैं, वो भी फिजिक्स से रिलेटेड, और वो भी जो है लास्ट 10 ईयर्स में जो भी चीजें, तो इस तरह का एक हम उसकी बेसिस पे एक फीचर्स का वो प्रोफाइल भी बनाते हैं। फिर उसके बाद जो है जब कोई नया आइटम आता है जो जिसके फीचर्स उससे सिमिलर होते हैं, एक नई फिजिक्स की बुक आ गई, ठीक है, तो वो फिर उसको उसको हम असाइन कर देते हैं स्कोर कि ये मेरी एक रिकमेंडेशन के लिए सुटेबल होगी, क्योंकि इट इज सिमिलर टू द अदर कंटेंट जो कि इसकी प्रोफाइल में क्वेश्चन थी। तो ये अप्रोच जो है ये कंटेंट बेस्ड है। कोलैबोरेटिव में ये था कि सिमिलर पीपल लाइक सिमिलर प्रोडक्ट्स, इसमें ये था कि जो पास्ट में जो प्रोडक्ट्स मैंने पसंद किया वही फिर फ्यूचर में भी पसंद करूँगा, ये कंटेंट बेस्ड है। नॉलेज बेस्ड जो है जिसमें बताया कि डोमेन मॉडल पे बेस करती है, इसमें पहले एक डोमेन मॉडल बनाना पड़ता है जिसमें हमने बताया था कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन के पीसेस होंगे, क्या वेरिएबल्स होंगे, फिर डेटा के पैटर्न्स जो हैं उसके अंदर वो ट्रैक करने पड़ते हैं, किस तरह से वो लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, यूजर इंटरेक्शंस को ट्रैक करके फिर उसकी बेसिस पे रेटिंग प्रोबेबिलिटीज वो कैलकुलेट की जाती हैं और उनको रिकमेंड किया जाता है। तो अब इन तीनों एल्गोरिथम्स की जो ये तो बेसिक आइडियाज थे, इनके थोड़े से मैथमेटिकल स्टेप्स जो हैं हम देखेंगे ताकि हमारे ये और क्लैरिफाई हो जाए कि ये किस तरह से ये डिफरेंट काम करते हैं। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप लोगों से पूछा जाए कि आपके ख्याल में ये इसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है इन एल्गोरिथम। तो क्या हम एक नया रिकमेंडर सिस्टम बना सकते हैं जो इन तीनों से डिफरेंट हो, या इनको हम किसी तरह से कंबाइन कर सकते हैं टू इंक्रीज, और वो क्या कॉम्बिनेशन होनी चाहिए जिसकी मदद से जो है वो जो रिकमेंडेशन की एक्यूरेसी है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। और जैसे कि हमने देखा था कि ये जो है आपको नजर तो ये ज़्यादातर कमर्शियल डोमेन में आता है, लेकिन ये किसी भी हम डोमेन में रिकमेंडर्स को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर एक विलेज है उसमें हमें हमारे पास मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं उनकी हमारे पास शॉर्टेज है, तो हम रिकमेंडर सिस्टम्स जो है वो इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू ट्रीट दिस पर्सन इन दिस सर्कमस्टेंस। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप अपनी इमेजिनेशन को जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करें टू कमर्शियल डोमेन्स, उनको खुद इमेजिन करें कि कौन कौन से एरियाज में हम इस टाइप की एल्गोरिथम्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। So let's move forward. ये अब हाइब्रिड अप्रोचेस जो ऑलरेडी यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, दिस इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर मेथड्स जो हमने अभी देखे हैं इंक्लूडिंग नॉन पर्सनलाइज्ड मेथड्स। और पर्सनलाइज में जो हमने देखी थी कोलैबोरेटिव कंटेंट बेस्ड और नॉन बेस्ड, इनकी भी कोई कॉम्बिनेशन हो सकती है, वो हाइब्रिड अप्रोच लाएगी।
तो अब हम कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग की थोड़ा सा अब हम मजीद डिटेल में, अभी तो हमने एक बेसिक ओवरव्यू देखा था, अब हम उसको जो है थोड़ा सा मोर मैथमेटिकल ओवरव्यू की तरफ जा रहे हैं। तो हमने देखा था कि बेसिक स्टेप्स में ये होता है कि सबसे पहले हम यूजर्स यूजर्स हैं सिमिलैरिटी लेवल हम मालूम करने की कोशिश करते हैं कि कौन से यूजर्स हैं वो किस यूजर से कितना मिलते हैं। तो ये एक पहला स्टेप था उसमें। तो इसको करते कैसे हैं कि हम जो उन्होंने रेटिंग्स दी होती हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को इन द पास्ट, उनको पहले हम नॉर्मलाइज कर लेते हैं, फिर हम उनकी जो है एवरेज रेटिंग्स जो है वो मालूम करते हैं, और उसके बाद फिर हम उनकी सिमिलरिटी रेट्स मालूम करते हैं। ये आपको मैं एक्चुअल फॉर्मूले से भी बता रहा हूँ, लेकिन ये के अंदर स्टेप्स होते हैं कि आपने पहले रेटिंग्स जो है उनको नॉर्मलाइज करना होता है और एवरेज मालूम करनी होती है। These are the key steps। उसके बाद फिर जो है हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर इस आदमी ने ये इस प्रोडक्ट को अभी तक रेट नहीं किया, तो व्हाट आर दी प्रोबेबल रेटिंग्स, क्या ये 1 स्टार मिलेगा इसको या 5 स्टार मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि हम प्रोबेबल जो मोस्ट लाइकली रेटिंग होती है वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, और फिर जिनकी सबसे ज्यादा प्रिडिक्टेड रेटिंग्स आती हैं उनको हम रिकमेंड कर देते हैं। तो ये जो पहला स्टेप है सिमिलर यूजर्स का, कि किस तरह से हम सिमिलर यूजर्स फाइंड करते हैं, इनके लिए जो सिमिलैरिटी की कैलकुलेशन होती है उसमें ये 3-4 जो है मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ये कहलाते हैं कोरिलेशन मेथड, कोवेरियंस मेथड, और कोसाइन सिमिलैरिटी, और के नियरेस्ट नेबर्स एल्गोरिथम्स, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी कभी-कभार इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो है डिफरेंट ये मैथमेटिकल टूल्स हैं, आप यू आर फेमिलियर विद देम, जैसे आप कोरिलेशन से या कोवेरियंस से आप डेफिनेटली फेमिलियर होंगे अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है। कोसाइन सिमिलैरिटी से भी आप शायद वाकिफ हों, और अगर आपने डेटा माइनिंग वगैरह का कोई कोर्स किया अभी तक ऑलरेडी, तो आप इससे भी वाकिफ होंगे कि नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम से भी वाकिफ होंगे। तो ये वाले जो हैं हम रिकमेंडेड सिस्टम्स में इनको यूज करते हैं टू फाइंड सिमिलैरिटी। कोरिलेशन सबसे पहले जैसे है, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला इट लुक्स बिट कॉम्प्लेक्स, लेकिन असल में ये इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, क्योंकि सिमिलैरिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स जो है वो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। और एक्चुअली एक्सेल में जब मैं आपको ये दिखाऊंगा तो इट लुक्स सिंपलर देन इट लुक्स हियर देन दिस। ठीक है, बेसिकली, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर आप गौर से देखें इसके डिनोमिनेटर में, तो ये पाइथागोरियन जो थ्योरम है वही इस्तेमाल हुआ हुआ है वहाँ। ठीक है, पाइथागोरियन थ्योरम जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, और डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं बाय उसका जो डिफरेंस है उसको पहले स्क्वायर करते हैं, और फिर उसको जो है सबको सम कर लेते हैं, और फिर उसका अंडर रूट ले लेते हैं इन दी एंड। वो इसलिए हम करते हैं ताकि हमें जो है हम जब स्क्वायर करते हैं डिफरेंसेस को, तो इसलिए हम करते हैं ताकि हमारे पास कोई नेगेटिव क्वांटिटीज ना बचे। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम स्क्वायर नहीं करेंगे, तो अगर हम एक बड़े मैग्नीट्यूड से छोटा मैग्नीट्यूड माइनस करेंगे वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर हम अदर वे राउंड करेंगे तो वो नेगेटिव आंसर आ जाता है। और फिर समटाइम्स अगर हम दो दो कोऑर्डिनेट्स को इस तरह से ऐड करेंगे जिसका एक का पॉजिटिव आंसर है एक का दूसरे का नेगेटिव आंसर है, तो वो आपस में कैंसिल भी कर सकते हैं। तो वी डोंट वांट टू डू दैट, इसलिए हम पहले उनको सबको स्क्वायर कर लेते हैं, तो उससे वी जस्ट गेट द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड्स, और फिर उनको सम करते हैं। लेकिन फिर क्योंकि हमने सबको स्क्वायर किया हुआ है, तो ज़ाहिर है वो मल्टीप्लाई हो गया डिफरेंस, तो उसको फिर दोबारा से वापस अपने स्केल पे लाने के लिए हम उसको अंडरस्कोर उसको दोबारा से ले लेते हैं। तो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग हियर इन दिस फॉर्मूला। ठीक है, पहले डिफरेंस इसका स्क्वायर लिया गया, उनको सम किया गया, फिर उसका अंडर रूट लिया गया। कोसाइन सिमिलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? कोसाइन सिमिलैरिटी इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो इस तरह से होती है कि मिसाल के तौर पे हमने किसी प्रोडक्ट को जो है 3 डायमेंशंस में हमने उसको रेट किया, एक्स वाई और जेड, कोई भी डायमेंशन हो सकती है। मिसाल के तौर पे उसकी प्राइस कितनी सूटेबल थी, उसका कलर कितना अच्छा था, वगैरह कोई भी फीचर्स जो हमने लास्ट स्लाइड में हम जो बात करते हैं हम फीचर एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो फीचर्स जो हैं उनको हम हर फीचर को एक अपने एक्सिस के ऊपर जो है मैप कर सकते हैं। ठीक है, कि ये जो है कितना इसमें स्कोर आया उस डायमेंशन में। तो अगर मिसाल के तौर पर सिर्फ हमारे पास 3 फीचर्स हैं, तो होगा ये कि हर प्रोडक्ट के हमारे पास 3 वैल्यूज आएंगी, उसके पहले फीचर की, सेकंड फीचर की, थर्ड फीचर की, और उसको अगर हम एक कोऑर्डिनेट के तौर पे उसको अगर इमेजिन करें, तो इट विल बी a 3-dimensional vector or a vector in a 3-dimensional space। क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट है उसके उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स 1 1 1 आए, तो दैट विल बी वेक्टर that is pointing to this point 1 1 1 in the 3-dimensional space। और अगर दूसरा एक हमारे पास वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0.5 2
or 0.5, तो that will be a different point in 3-dimensional space और ये different direction में point करेगा. तो अगर हम इन दो वेक्टर्स की आपस में एंगल देख लें कितना है तो उससे हमें पता चलेगा कि कितना सिमिलर डायरेक्शन में ये पॉइंट कर रहे हैं. तो अगर दोनों एक्जैक्टली सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि ये दोनों बिल्कुल सिमिलर वेक्टर्स हैं. और अगर वो बिल्कुल 90 एंगल पे एक दूसरे के पॉइंट करेंगे तो हम कहेंगे इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं. ठीक है. और अगर आपस में 30 डिग्री का एंगल बनता है तो हम कहेंगे हाँ सिमिलरिटी कुछ है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, 30% है फॉर एग्जाम्पल. तो कोसाइन सिमिलरिटी क्या करती है कि जो प्रोडक्ट्स की जो रेटिंग्स होती हैं उनको वो जो है उतनी ही डायमेंशनल स्पेस पे मैप कर दिया जाता है और हर प्रोडक्ट का फिर एक वेक्टर हम देखते हैं उस स्पेस में वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है. और फिर जिस भी दो प्रोडक्ट की सिमिलरिटी डेवलप करी हो उन दोनों प्रोडक्ट्स का जो वेक्टर्स हैं उनका हम देखते हैं कि वो उनके दरमियान में क्या एंगल है. और फिर उस एंगल का हम कोसाइन इसलिए लेते हैं क्योंकि कोसाइन की एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि ये 0 से लेके 1 तक जो है रेंज करता है. और इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास जैसे पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करें तो 0 से लेके 1 तक ये रेंज करते हैं और 0 का मतलब होगा कि 0 सिमिलरिटी और 1 का मतलब होगा 100% सिमिलरिटी. तो इसलिए हम इसे यूज करते हैं. अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है ये बताऊंगा कि ये हम कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग का एल्गोरिथम किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं ऑन अ स्प्रेडशीट यूजिंग वेरी सिंपल फॉर्मूलाज. क्योंकि हमें बेसिक स्टेप्स हमें पता चल गए. ये बेसिक स्टेप्स ये हैं कि पहले जो है यूजर्स की सिमिलरिटी मालूम करें. ठीक है. फिर उनकी रेटिंग्स जो है उनकी एवरेज रेटिंग देखें हर यूजर की और जो मिसिंग रेटिंग है उसको हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें. तो ये बहुत ही सिंपल सी स्प्रेडशीट आपके सामने है. इसके अंदर हमारे पास 4 यूजर्स हैं ए बी सी और डी और हमारे पास 4 टाइप की प्रोडक्ट्स हैं फ्रूट वेजिटेबल बीन्स एंड राइस. और हर यूजर ने अपनी जो है पसंद का इजहार रेटिंग के थ्रू से किया. जैसे यूजर ए है उसको फ्रूट भी पसंद है वेजिटेबल्स भी पसंद है लेकिन बीन्स और राइस इतने पसंद नहीं. ठीक है. तो उनकी रेटिंग कम है, फ्रूट और वेजिटेबल्स की ज़्यादा है. यूजर बी जो है उसका ऑलमोस्ट ऑपोजिट बिहेवियर है. उसको फ्रूट एंड वेजीज इतने पसंद नहीं है लेकिन बीन्स एंड राइस बहुत पसंद है. और जो यूजर सी है उसको भी लग रहा है कि फ्रूट एंड वेजी पसंद है और बीन्स और राइस पसंद नहीं है. एंड देन देयर इज अ यूजर डी जिसने जो है वेजिटेबल्स को जो कोई रेटिंग नहीं दी. और हमारा काम होती है कि हम इसी डेटा को इस्तेमाल करते हुए प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें कि एक्स में जो है क्या रेटिंग आएगी. अगर यूजर डी से हम कहेंगे कि ये इसको रेट करें वेजिटेबल को तो वो क्या रेट करेंगे. कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग जो है वो कहती है कि पहले तो देखिए आपके यूजर डी से सिमिलर कौन कौन से यूजर्स हैं. ठीक है. विच यूजर्स आर सिमिलर टू यूजर डी उनको कैलकुलेट करें. तो इफ यू जस्ट लुक एट द डेटा क्योंकि ये बहुत छोटा सा डेटा है तो इसलिए हम वी कैन जस्ट eyeball the differences and say कि maybe user C looks similar to user D. ठीक है. तो रेटिंग मैच कर रही है तकरीबन. ठीक है. फ्रूट का तो बिल्कुल मैच कर रहा है, बीन्स का भी मैच कर रहा है, राइस का 100% मैच नहीं कर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, सिर्फ 1 का डिफरेंस है. यूजर बी जो है काफ़ी डिफरेंट लग रहा है. ठीक है. क्योंकि उसमें काफ़ी बड़े बड़े डिफरेंसेस आ रहे हैं रेटिंग में. और इसी तरह से यूजर ए जो है वो भी काफ़ी सिमिलर लग रहा है, तो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है. तो पहले तो हम यूजर्स की सिमिलरिटी मालूम करेंगे. फिर उसका फायदा क्या होगा यूजर की सिमिलरिटी मालूम करके. ठीक है. ये जो सिमिलर यूजर्स हैं उनको हम देखेंगे कि उन्होंने वेजिटेबल्स को जो है वो क्या रेट किया. ठीक है. जो सिमिलर यूजर हैं दोनों ने वेजिटेबल्स को हाई रेट किया तो इसका मतलब होगा कि यूजर डी जो है इसकी भी रेटिंग तकरीबन हाई होनी चाहिए. लेकिन एक्जैक्टली क्या होनी चाहिए ठीक है ये हमें फॉर्मूला से पता चलेगा. तो यहाँ तक आपको ये स्प्रेडशीट समझ आ गई थी कि इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं. Everyone please unmute them and tell me if they understand this spreadsheet. जी महात मुझे कुछ आवाज नहीं आपकी, आप कुछ कहते हैं. यस सर समझ आ रही है. एक्सीलेंट. ऑलराइट. तो ये जो है अब मैंने एक्चुअल कैलकुलेशंस करके आपको यहाँ पे दिखाई है. इसमें हमारे पास वही 4 यूजर्स हैं, यूजर 1 2 3 4 एंड वी हैव 4 प्रोडक्ट्स B1 B2 B3. और हमारे पास जो है उनकी रेटिंग्स हैं और उसमें आपने देखा कि उसके नीचे हमने हर प्रोडक्ट के लिए एक एवरेज रेटिंग निकाली है और हर यूजर की भी एवरेज रेटिंग निकाली है. ये जो एवरेज है इस रो में ये हर प्रोडक्ट की एवरेज रेटिंग आ रही है. और ये जो इस कॉलम में एवरेजेस हैं ये यूजर्स की एवरेजेस. और फिर हम जो है इसको मैं अब आपको एक एक्चुअल स्प्रेडशीट में लेके जाता हूँ जिसके अंदर ये डेटा होगा और फिर ताकि हम उसके जो है फॉर्मूलास को भी देख सकते. So let me find out my spreadsheet. I have one over here. Let me share my screen now. Alright, so अब आप देखें कि ये हमारे पास स्प्रेडशीट है. इसमें हमारे पास 4 यूजर्स हैं और हमारे पास 4 आइटम्स भी हैं. Let's try to enter the data जो हमारी इस पे था स्लाइड्स पे जो था पहले. So data was something like
ये वाला डेटा जो था was 8912. तो अब आप देखेंगे इसमें हमारे पास ये 4 आंसर इसको ऐड करना चाहिए। तो हमारे पास ये यूजर्स हैं, इसमें यूजर 1 और 3 को मैंने कोशिश की कि यूजर 4 के सिमिलर लेके आऊं। तो अब हम देखते हैं कि सिमिलरिटी जो है हम कैसे कर सकते हैं। तो आई थिंक ये जो एरिया है स्प्रेडशीट का जो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, तो अगर आप ये देखें ये वाला जो फिगर्स है इस एरिया के अंदर, ये उनकी सिमिलरिटी को शो कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरिटी अब एक देखें कि यूजर 1 और 2 की सिमिलरिटी जो है वो 0.29 है। इसका मतलब 1 और 2 इतने सिमिलर नहीं है, लेकिन 1 और 3 जो है वो काफी सिमिलर है, 0.98 है उनकी सिमिलरिटी। और 1 और 4 जो है वो तकरीबन हाफ ऑफ इसकी सिमिलरिटी। इसी तरह से दूसरे यूजर्स की भी आप देख सकते हैं 0.4, 0.6, 0.9 जो वगैरह। तो इसमें जो है ये इस फॉर्मूला में कैलकुलेट कैसे किया, ये जो है ये इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ये कोसाइन सिमिलरिटी कहलाता है। इसमें आप सिंपली क्या करते हैं कि ये जो इनकी एवरेज रेटिंग्स है इनको इस्तेमाल करते हैं। और ये वाला जो नंबर्स है ये कैसे आते हैं ये मुझे पहले बताना पड़ेगा, तब हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यूजर टू यूजर सिमिलरिटी कैसे कैलकुलेट होती है। तो यहाँ पे अगर देखें ये वाला बॉक्स जो है, ये जो यूजर 1 की प्रोडक्ट 1 की जो रेटिंग है, यानी कि जो C2 के अंदर जो रेटिंग मौजूद है 8 रेटिंग है इसमें, मैं इसको टाइटल चेंज कर देना ताकि हमें, तो यूजर 1 ने वेजिटेबल को 8 किया है, लेकिन ये जो वैल्यू नजर आ रही है ये आपको नजर आ रही है डिफरेंट बिकॉज 8 has been divided by G2. So what is G2? G2 is the normalizer. तो अगर आपको याद हो कि हमने बेसिक स्टेप्स में हमने कहा था कि हम रेटिंग्स को नॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है, तो वो इसलिए नॉर्मलाइज करना पड़ता है क्योंकि समटाइम्स हो सकता है कि एक यूजर जो है वो लीनियर किस्म का यूजर हो और वो हर चीज को जो है वो हाई, नॉर्मली हाई उसे पसंद भी आए तो वो बहुत हाई स्कोर देता है, लेकिन दूसरा हो सकता है कि स्ट्रिक्ट हो और वो कम स्कोर करता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर पसंद है तो वो 3 करेगा, अगर नहीं पसंद है तो 1 करेगा, तो उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन उसकी प्रेफरेंस हमें पता चलेगी कि 3 का मतलब है कि ये पसंद है, 1 जो है वो कम पसंद है। और एक दूसरा है वो जिसको पसंद आती है उसको 10 देता है और जो नहीं पसंद है उसको 8 देता है। तो ये 10 और 8 दोनों जो हैं बहुत बड़े फिगर्स हैं एज कम्पेयर टू 3 एंड 1, लेकिन इनकी जो ऑर्डरिंग है प्रेफरेंस की वो सिमिलर है। ठीक है, 10 जो है वो ज़्यादा पसंद आया और 8 कम पसंद आया। तो इसलिए जो है इन डिफरेंसेस को हटाने के लिए ये स्ट्रिक्ट रेटर है या ये लीनियर रेटर है, हम इसको नॉर्मलाइज कर देते हैं रेटिंग्स को। नॉर्मलाइज का मतलब है कि हम सबको हम बिटवीन 0 एंड 1 पे मैप कर देते हैं हर रेटिंग को। ठीक है, तो वो मैप कैसे करते हैं बिटवीन 0 टू 1, तो उसको हमें हर रेटिंग को ना उसके नॉर्मलाइजर से जो है डिवाइड करना पड़ता है, और नॉर्मलाइजर जो है वो सिंपली उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, अगर एक आदमी ने तीनों प्रोडक्ट्स को 1 1 1 रेट किया है तो उसका जो वेक्टर आएगा वो 45 एंगल पे होगा हर एक्सिस से। ठीक है, और एक दूसरा रेटर है उसने हर प्रोडक्ट को 2 2 और 2 किया है, तो उसका भी जो है वेक्टर जो है वो 45 एंगल पे होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि वो उसकी जो कोऑर्डिनेट्स है वो उसकी वैल्यू ज्यादा थी। तो अगर हम इन्हें नॉर्मलाइज कर दें, नॉर्मलाइज का मतलब है कि जो वेक्टर है उसको उतनी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमारे पास वो यूनिट वेक्टर आ जाता है। यूनिट वेक्टर जो है वो हमें सिर्फ डायरेक्शन देता है, हमें मैग्नीट्यूड्स का फिर हमें कोई कंसर्न नहीं रहता। व्हेन वी डिवाइड अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड इट मींस दैट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द डायरेक्शन एंड नॉट द साइज ऑफ दैट वेक्टर। तो ये जो जी कॉलम है इसमें ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं ये सिर्फ उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो दिस इज द नॉर्मलाइजर, और इसे जब हम रेटिंग को उसके नॉर्मलाइजर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नॉर्मलाइज्ड रेटिंग आ जाती है। तो यू सी दैट दीस आर द नॉर्मलाइज्ड रेटिंग्स फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स हियर। यहाँ पे हमारे पास आ रही है 0 0 इसलिए आ रही है आपको क्योंकि यहाँ पे हमने एक बॉक्स जो है वो उसको मिसिंग करता है। अब हम इनको नॉर्मलाइज रेटिंग्स को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मलाइज रेटिंग को सिंपली हम क्या करें कि हमारे पास इनकी हम डॉट प्रोडक्ट लें। ठीक है, अगर आपको याद हो अगर आपके वेक्टर्स पढ़े होंगे तो उसमें वेक्टर्स की दो तरह की प्रोडक्ट्स होती थी, एक डॉट प्रोडक्ट होती थी और एक क्रॉस प्रोडक्ट होती थी। डॉट प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली कोसाइन एंगल जो है वो कैलकुलेट करती है बिटवीन टू वेक्टर्स। सो दैट्स व्हाई वी जस्ट सिंपली यूज द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला बहुत आसान होता है, वी जस्ट मल्टीप्लाई individual coordinates with the corresponding coordinate of the other vector and of the तीन का सम ले लेते हैं। For example, अगर कोई पहला वेक्टर है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं a1 b1 c1 और दूसरा वेक्टर है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं a2 b2 c2, तो उनकी कोसाइन सिमिलरिटी या डॉट प्रोडक्ट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं a1 को a2 से मल्टीप्लाई करते हैं,
B1 को B2 से मल्टीप्लाई करते हैं, C1 को C2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इन तीनों प्रोडक्ट्स का सम लेते हैं. So that is our डॉट प्रोडक्ट. हम उनके जो इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में और फिर उनको सबको ऐड कर देते हैं. तो आप अगर फॉर्मूले में देखें तो यही हो रहा है यहाँ पे. J2 को J3 से मल्टीप्लाई किया गया, K2 को K3 से, L2 को L3 से, M2 को M3 से. हमारे पास 4 रेटिंग्स थी तो हमने चारों कोऑर्डिनेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और उसका रिजल्ट आप ये देख सकते हैं. ये जो है U1 और U2 जो है, ये U1 की रेटिंग्स, नॉर्मलाइज रेटिंग्स और U2 की नॉर्मलाइज रेटिंग्स जो है उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं. हम आंसर लेके आ गए. तो ये हमारा जो है स्टेप 1 आज हो गया कि हाउ डू वी कैलकुलेट सिमिलैरिटी बिटवीन यूजर्स. अब आपको मैं नेक्स्ट क्लास में जो है इसके फर्दर स्टेप्स बताऊंगा कि किस तरह से करते हैं सो दैट वी कैन come up with the value for this blank box over here. Because blank box को हमने fill करना है using these simple formulas, and I hope you'll be able to follow what I have discussed today. Do you have any questions? Do you have any questions regarding the content that we discussed today or any other thing that you would like to discuss or comment? Okay, that's great. Thank you very much. So that's all for today, and I'll see you on Wednesday.